नो व्हाइट बोर्ड के ऊपर टीचिंग करूंगा मैं, ठीक है। अब दिस इज your inter-electronic repulsion parameter, that is RACA parameter on y-axis, and ligand field strength on x-axis. Ligand field strength on x-axis, okay. x-axis के ऊपर ligand field strength रहेगी. So one common diagram has been proposed for the splitting of F term. So for the splitting of F term, we have to consider two energy term. One is F and another one is P, next term, okay, in energy sequence. So this is your F term, and the next term which has to be considered is P term. P term. So how the splitting is taking place? So F term की splitting एक इस तरीके से रहती है, बराबर है, एक इस तरीके से रहती है और एक इस तरीके से रहती है. So this is your T1G, this is your T2G, this is your Barry center. ये आपका Barry center रहेगा, horizontal axis, and this is your A2G. तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा कलर ग्राफिक्स करूंगा मैं ताकि पहचान में आ जाए. दिस इज योर F टर्म, और P टर्म जो है वो आपका इस तरीके से रहेगा. It will, since there is no splitting of p orbital, so P term कोई भी split नहीं होगा. It will be simply transformed to T1G, okay, T1G. So 3p 3f. कौन सा सिस्टम है ये? D2 सिस्टम. कौन सा सिस्टम? D2 सिस्टम, बराबर है. और D2 से पैरेलल कौन रहेगा? D8 रहेगा. D2 से पैरेलल कौन सा रहेगा? D8. तो दोनों के लिए सेम टर्म रहेगा. सो वी हैव टू कंसीडर दिस टू टर्म्स. Triplet F, triplet P. Now Barry center has to be extended on this side. Barry center has to be extended on this time, okay. और ये रिवर्स किया जाएगा. इसका मिरर इमेज लेफ्ट हैंड साइड में निकालो, मतलब मिरर इमेज नहीं, अपोजिट, सॉरी. सो ये यहाँ आएगा और ये इधर एक्सटेंड होगा, बराबर है. और ये वाला जो है वो T1GP ऊपर नहीं जाएगा, ये इधर एक्सटेंड होगा. और ये P जो है वो इसको क्रॉस नहीं करेगा, वो यहाँ तक सेम आएगा और यह ऊपर चला जाएगा, ऐसा ऊपर, ओके. So these two terms will never cross because they are same symmetry. T1G symmetry के दोनों टर्म है. तो ये है T1G derived from P term having triplet multiplicity, और दूसरी जो है वो भी T1G है, but this is derived from F term. F term से derived है, बराबर है. So there will be no crossover whenever the two same energetic terms they meet each other, they never crosses, okay. So this is called as crossover rule.
This is your T2G derived from F. This is your triplet A2G derived from F term. So this is again triplet A2G derived from F term, triplet T1G derived from F term, and triplet T1G derived from F term, T1G derived from V term. Okay. So this whole diagram is the diagram for original diagram for splitting of F term. Okay. तो F term की स्प्लिटिंग के लिए ऑर्गल डायग्राम निकालो, अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो ये वाली डायग्राम निकालनी पड़ेगी। अब मुझे बताओ कौन सी डायग्राम किसकी है, D2 की राइट हैंड साइड वाली है या D8 की राइट हैंड साइड वाली है? प्रश्न विचारतोय मी तुम्हाला, तुम्ही ऑनलाईन आहे सर्वजण? येस, नंदिनी खोबे, are you getting what I am teaching? खोबे, हॅलो, ऐकायला येतंय का रे? Yes, sir. हा, मग सांगा राइट हँड साइड डायग्राम D2 सिस्टमची आहे की D8 सिस्टमची आहे? राइट हँड साइड D. डायग्राम मध्ये आपण काय ऑब्झर्व करून राहिलो की T2G सॉरी F टर्मची स्प्लिटिंग झालेली आहे आणि ती स्प्लिटिंग इज रिवर्स टू क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग, इजंट इट? क्योंकि F ऑर्बिटल की क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग कैसे होती है, ये लेफ्ट हैंड साइड की तरह से होती है। A2G नीचे, फिर T2G और सबसे टॉप में T1G। तो राइट हैंड साइड वाली डायग्राम जो है उसमें हम देख रहे हैं कि T1G सबसे नीचे है और A2G सबसे ऊपर है, मतलब ये ऑर्डर जो है वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑर्डर से रिवर्स है, किसमें? F ऑर्बिटल के लिए। ओके, तो वाई, तो ऐसा कौन कब रहता है सिचुएशन? Whole सिचुएशन कब inversion. रहता है? When the splitting order is reversed to that of crystal field splitting order in case of F orbital, if it is happening according to the whole inversion, sorry, electron promotion, बराबर है? अगर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रमोशन की वजह से हो रहा है, अगर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रमोशन की वजह से हो रहा है तो F टर्म के लिए स्प्लिटिंग ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। और अगर वही एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर वो होल इन्वर्शन से हो रहा है तो ऑर्डर क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग ऑर्डर के जैसा रिटेन किया जाता है। किसके केस में? F टर्म के केस में। ओके, D टर्म के केस में इससे उल्टा होता है। तो T2G नीचे, सॉरी T1G नीचे, A2G ऊपर, ये रिवर्स ऑर्डर है। रिवर्स ऑर्डर है मतलब ऑर्डर इज रिवर्स टू दैट ऑफ क्रिस्टल और फिल ऑर्डर, मतलब ये इलेक्ट्रॉन प्रमोशन है। इलेक्ट्रॉन प्रमोशन अब D2 में होता है या D8 में होता है? D2 में। सो राइट हैंड साइड डायग्राम इज फॉर D2 सिस्टम। सो दिस इज डायग्राम फॉर D2 octahedral, D2 octahedral, D2 octahedral, and left hand side diagram is for D8 octahedral. Left hand side diagram is for
D8 octahedral. Okay. Now there is another term system, D3 system and D7 system. तो D3 एंड D7 सिस्टम के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म कौन सा रहता है? क्वार्टेट एफ, क्वार्टेट एफ रहता है, isn't it? So quartet F. Now let us assume the splitting of quartet F term. क्वार्टेट एफ टर्म का स्प्लिटिंग अगर कंसिडर करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, जस्ट टू इंस्टेड ऑफ 3 वी हैव टू राइट 4, वी हैव टू राइट 4. ओके, सब में क्वार्टेट आएगा, सब में क्वार्टेट आएगा. क्वार्टेट क्वार्टेट क्वार्टेट, और ये रेड कलर में क्वार्टेट 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 A2G, क्वार्टेट T1G, क्वार्टेट T2G, क्वार्टेट A2G. ओके, ये हो गया. अब D3 सिस्टम देखो, D3 सिस्टम में क्या हो रहा है? एक्साइटेशन, इलेक्ट्रॉनिक प्रमोशन हो रहा है या होल इन्वर्शन हो रहा है? होल इन्वर्शन हो रहा है. कैलकुलेट करके देखना D3 सिस्टम में. ओके, excitation of electron is due to hole inversion. So since it is due to hole inversion, crystal field splitting order will be retained. Okay, for the splitting of F term, crystal field splitting order will be retained. So D3 octahedral के लिए left hand side वाला diagram रहेगा. So D3 octahedral और रिवर्सली D7 octahedral के लिए राइट हैंड साइड वाला डायग्राम रहेगा. octahedral. Okay, so right hand side diagram is for D2 octahedral and D7 octahedral, whereas left hand side diagram is for D3 and D8 octahedral. Now everything will be reverse for tetrahedral. So अगर वही डायग्राम हम टेट्राहेड्रल के लिए बताना चाहे तो राइट हैंड साइड डायग्राम विल बी फॉर D3 and D8 tetrahedral. D3 and D8 tetrahedral, and left hand side diagram is for D2 and D7 tetrahedral. Okay, what will be the difference between octahedral and tetrahedral? Wherever you wish to write the tetrahedral, you have to omit G term. ही जी टर्म जी सुपर सबस्क्रिप्ट मध्ये आहे ती टर्म आपल्याला इरेज करावी लागेल प्रत्येक ठिकाणी, तर ते बनेल टेट्राहेड्रल्स. ओके, so is it clear? Now what information we can calculate? So once you remember the original diagram for the splitting of F and D term, it is very easy to study the electronic spectra for T1 to D9 system. Okay, जैसे कि ये हो गया, ये D2 सिस्टम ऑक्टाहेड्रल के लिए है. तो कोई भी एक कॉम्प्लेक्स ले लो D2 सिस्टम का और उसको बोलो कि हाउ विल यू एक्सप्लेन द ऑर्डिनल डायग्राम or electronic spectra of this complex on the basis of orbital diagrams. It will be very easy, very easy. Number one transition, number two transition, and number three transition. Okay, so first transition will be obtained by excitation of electron from T1GF to T2GF. Second transition will be obtained by excitation of electron from T1GP to
A to G, sorry, T1GF to A2GF, and third transition will be obtained by excitation of electron from T1GF to T1GP. Okay, so this will be called as mu1, this will be called as mu2, so this will be called as mu3. So three bands will be obtained in the electronic spectra. The lower energetic band will be the band responsible for the visible light. So I hope it will give you delta O value. ये delta O की value देगा आपको, बराबर है? delta O की value नहीं, delta O की value ये नहीं देगा. delta O की value आपको देगा mu3 minus mu1, क्योंकि डेल्टा ओ कौन सा है, ये है, इनके बीच में का ये वाला डेल्टा ओ है. तो ये डेल्टा ओ निकालने के लिए आपको इसमें से ये वाला माइनस करना पड़ेगा, मतलब mu3 माइनस mu1 विल बी इक्वल टू डेल्टा ओ. ओके, तो ये सब पैरामीटर्स निकलते हैं. सो मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हुआ होगा. नेक्स्ट टाइम आई विल टेक एग्जाम्पल ऑफ एवरी सिस्टम. जैसे D1 सिस्टम, कौन सा D1 सिस्टम, टिटेनियम हेक्साक्वो कॉम्प्लेक्स. ओके, टिटेनियम हेक्साक्वो कॉम्प्लेक्स. सो D1 सिस्टम. उसके और D2 सिस्टम का एग्जांपल लूंगा, D3 सिस्टम का एग्जांपल, D4, D5, D6, D7, D8, D9. ओके, तो ऐसे 9 एग्जांपल हम लेंगे. 9 एग्जांपल्स में हर एक सिस्टम में कितने पिक्स मिलते हैं और वो पिक्स कौन से ट्रांजिशन की वजह से होते हैं और उस पिक के आधार पर डेल्टा ओ की वैल्यू कितनी रहेगी और फिर राका पैरामीटर्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये सब निकालेंगे. ओके, so I stop here. If you have any question in your mind, you are very free to ask me. ही डायग्राम समजली का तेवढं सांगा फक्त. मी Yes, sir. मुद्दामून हाताने काढून दाखवलाय. त्याला डायरेक्ट डिस्प्ले पण करू शकतो मी, पण ते डिस्प्ले केलेलं जास्त डोक्यात उतरणार नाही, बरोबर आहे की नाही. So I will stop here. I request no, I order to all of you to read the material from the books or internet on Orchel diagram. Okay, and try to remember the splitting order of F and D term. Okay, in various octahedral and tetrahedral system, so that in next lecture we will not waste much more time on it. Okay, thank you. I will stop here. Ade is present. Yes, sir. ठीक है. Don't leave the meeting. Just let me have a screenshot for your presentee. Okay. Now you can leave the meeting.